पढ़ाई के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जितना तुम ज्यादा सीखोगे, जॉब मार्केट बहुत बहुत टाइट है अभी, और कोविड के बाद तो बहुत इश्यूज हैं। सो जब तक तुम अपना बेस्ट नहीं दोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। लाइफ इज बिट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो जो स्किल्स तुमको चाहिए, वो सारी स्किल आपको एक जगह पे प्रॉपरली सिखाई जाएगी। आई कैन इंश्योर यू दैट आपको और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ वो आपको बता रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करो और प्रिपरेशन करो। एंड आई विल से ऑल द बेस्ट to all of you, all these students. If you reach somewhere, at least tell uh, Mr. Niketan that I have reached here and here, so that he has record where he has helped so many students to achieve their goals. So all the best once again to Mr. Niketan Tavre, his entire team, and also to all the students for their bright future with the bright ways. Thank you, Niketan. थैंक यू, थैंक्स अलॉट मैम। तो मैम को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अभी आपको टीचर्स डे विश करेगा। ओके, सो इट्स वी आर विशिंग एवरीबडी हैप्पी टीचर्स डे, and we are very much lucky that on this auspicious occasion we guys are starting this particular activity. So thank you Neelam ma'am for giving your valuable time to all our students who are listening to you from various places. तो स्टूडेंट, मुझे आपको वापस रिक्वेस्ट करना है कि यूट्यूब पे भी लाइव हमारा हो चुका है, एंड प्लस आप लोग भी अपने अपने सब फ्रेंड्स को ये मैसेज पोस्ट रीच कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एक्टिविटी। तो टुडे वी हैव टू स्पीकर, डॉक्टर नीलम मैम एंड एज वेल एज विजयलक्ष्मी मैम। तो डॉक्टर नीलम मैम से वी विल स्टार्ट द एंटायर एक्टिविटी। तो डॉक्टर नीलम मैम का अगर हम ओरिएंटेशन देना चाहेंगे, तो डॉक्टर नीलम मैम इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आर.के. टर्लेजा कॉलेज, उल्लासनगर। ओके, शी हैज डन हर एमए, MPhil, and after that she has done her PhD. And जब भी मैंने ये एक्टिविटी को प्लान किया कि वी आई वांट दैट समबडी फ्रॉम एकेडमिक सेक्टर शुड गाइड आवर स्टूडेंट, तो मुझे सबसे पहले नीलम मैम का ही थिंकिंग आया कि नीलम मैम के थ्रू हम ये सेमिनार को चालू करेंगे, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम FY SY TY। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई तो आपके तरफ से बात करने के लिए चाहिए। इसके लिए ऐसे स्पीकर से मुझे चालू करना था। तो वेलकम नीलम मैम, नीलम मुलचंदनी मैम, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड वी रियली व्हाट वी कैन से, we are really lucky that you are given your valuable time, and we are very much what we can say lucky that you are here and sharing your valuable thoughts. Neelam ma'am, over to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for a short and precise introduction. And at the outset, first and foremost, I would like to say a very good evening to Niketan sir, founder of Brightways, Professor Neelam Kapoor ma'am, HOD of Physics Department of R.K. Talreja College, and also in a way my mentor, my co-speaker Vijayalakshmi ma'am, and all my dear participants. At the outset, I would like to warmly congratulate Mr. Niketan Tavre and his team for organizing this virtual orientation course, Angreji Kaksha. And I would also like to express my deep gratitude to him and his team for choosing me to be one of the speakers at this virtual seminar, which is an orientation for the English language. Thank you, sir. So the topic which I'm going to speak on today, as the title of the activity itself, the 5-day activity itself is Angreji Kaksha, English class. I have chosen to speak to tell you why learning English as a language in today's world and for your career, professional career, is the in thing, is the most important thing. Okay, so I'm going to speak on that. You may ask me,
Why, ma'am? Why should we be fluent in English language? The answer lies in the very prerequisite nature of our society at large. This is a gift from the British people, and they were the one who started with English classes in India at least 150 years ago, more than that. Initially, it was considered as the language of the royal and upper class only. But by and by, today we are at a junction where communication is in this language is considered as one of the prerequisites for every field. It may be social, it may be professional. A language is a vital part of basic human connection. Cognitive language communication. Cognitive means understanding what you are communicating, and language is the medium through which you communicate. Sharing of ideas, our thoughts, is possible only with the help of a language. Language alone forms the basis of the upliftment of a particular society, or the lack of proper language skills may lead to the destruction of a particular language in a society. Today, English has become the language of international communication. It has captured all areas, to name a few: politics, science, media, as well as art. In fact, it has become the quintessential language of entertainment as well as socializing. So it is not only required in the formal areas, in the formal sector, but also in informal sector, when socializing, when speaking with people in the social field through the social media, we do need to have a good knowledge of English language. The origin of this language, as I've already told you, it was that the British rulers, they forced people in the countries over which they ruled to speak English rather than any other native language, their native language. So from that period onwards till today, this language has made vast progress in our country. At least it has conquered media, trade, business, and I don't think there is a single reason, not even one reason, to ignore the inevitability of learning this language, to learn, understand, read, write, as well as speak in this language. Let me give you, in short, the importance of this language. Why do you need to learn this language? It is the most well-known language in the world. In fact, I would not be wrong if I say that English is the global language. Let me give you some facts. It is the third most spoken language in the world. It is taught in over 118 countries. Please pay attention. 118 countries, more than half the countries in the world. They teach English language either as a second or third language in their school or college curriculum. It is the most commonly used language around the world in trade as well as in diplomatic exchanges. That is political spheres. This language is most preferred. It has become the language of science, aviation, computers, diplomacy, that is in the political spheres, as well as tourism. If you want to travel to different countries, though English may not be their main language or native language, but you can still be made to be understood by the native people, by the people living over there, even if you have a functional or working knowledge of English language. And as we come in contact with people from different regions, from different countries and continents, it broadens our mind. Cross-cultural exchanges, it
broadens the minds, they develop our emotional intelligence, our emotional skills, and thereby it helps to improve the quality of life by providing a number of different and uh, rewarding opportunities. Next, I would also like to say that today English is the language of business. It is the most dominant business language, and many times in many companies, it is the only requirement to mark entry into a global workforce. Today, we are looking at the global companies. We are not looking only at national companies. So many major and top-notch multinational companies expect their employees to be fluent in this language because it is the international communication gateway. Many international marketplaces and the knowledge of this language enriches our life. Being able to converse in English language itself paves the pathway to various elite universities and permits us to stand out on a common ground, irrespective of our birthplace, region of birth, our nationality, gender, and so on. So it is not only as far as the professional opportunities are concerned, but if you want to go ahead even as far as your educational pursuits are concerned, over there also English as a language is a must. The acquisition of this language will be a very, very important advantage. Another very important reason to learn this language is, which I think everyone will agree with me, that it is the top language of the internet. Internet, as you know, plethora of options are available online, unlimited resources, articles, and so on. The list is endless. The browsing experience will magnify if you are able to converse, if you are able to communicate with people all across the globe, if you are able to comment on tweets, participate in various discussions on various forums, read about the articles printed or published in reputed journals, read the newsletters, surveys, because the wealth of all the written media, online as well as printed, it all becomes handy with the awareness of this language. And many of the scientific papers, very reputed, knowledgeable papers, are written in English. And needless to say that the social media itself, which is a very important media of communication in today's world, it also majorly relies on English language. But let us not forget that in English language, we can have unlimited fun and frolic. How? Because it is the language of Hollywood. So whether it is reading a complete novel or Friday night options or classical films of different regions, of different generations, we can enjoy the authentic originals without having to depend on translations or looking at the subtitles if we are quite knowledgeable and conversant in this language. Streaming services like Netflix, Amazon Prime Video, Crackle, Tubi TV, and host of other channels, they provide delightful popular shows, reality shows, as well as knowledgeable nature documentaries and funny commercials too. In fact, the entertainment itself, entertainment in this language itself will elevate the jollification of our feelings and our time also. Now, I need not emphasize again that when you learn new language, when you learn new things, you converse with different people, especially from different countries, different regions. You come to know about their culture.
you come to know about their traditions, about their way of life, about their attitudes. It also, in a way, broadens your mental horizons. Our brain is the most important part of our body. Therefore, the wiring of the brain structure, enhancement of the thinking process, memory consciousness, and concentration heightens with the language learning or unmasking a new language. So, with the learning of this language, it also makes you to learn new things, and thus you will feel smarter by each passing day. It helps you to cross the cultural boundaries, as our planet Earth, as we all know, is full of different countries. There are thousands of schools and hundreds of universities scattered in each and every country. And each of these schools and universities have various programs, which fortunately or unfortunately, in whichever way we may look at it, are given only in the English language. Therefore, one more incentive for learning language is that learning this language provides you the key to the doors of various cultures. Therefore, it favors the multifold acquisition of knowledge and skills through study, experience, as well as teaching. I think I have given you a number of reasons to make you understand the need and importance of this language. Why learning of this language, apart from our other languages too, is very, very important in the world today. It will help you not only in your personal and social life, but it will also open up opportunities in the professional field too. Okay, so now let us come to the second part, or let us come to know that just saying that learning a language is not enough. What skills do you need to acquire to say that you have actually learned a language? Okay, so learning any language or acquisition of any language, it requires 4 skills: listening, reading, writing, and the last and the most difficult is speaking that language. I can say that listening, reading, writing, and speaking can be said to be the foundation skills of language grasping. Okay, so we start first and foremost any language. It may be our mother tongue or it may be any other language. We start by listening. Okay, when we listen to the words, it enhances our understanding. We come to, by and by, we come to understand what that word means, what it is associated with. So listening is the first skill. It is the primary learning skill. It is also called as the responsive ability, as it requires to utilize first our ears. We listen through our ears, and then the meaning is processed in our through our mind to understand. Okay, so if we are able to listen, that is hear as well as understand, we will be able to watch films, hear jokes, and in a way it will widen our vocabulary, it will enhance our pronunciation, grammar, which is a very, very important aspect of any language acquisition. It accelerates the learning process. Okay, so many firms have this urgent desire to be able to understand the documents of international companies. So being able to recognize the different notations, the accent, how the language is being spoken, which is the accent. If we are well versed in a language, we are able to understand the identity of the person, the region, the nationality by the way he speaks the language. In other term, I can say by his accent, pitch, through our pitch, the way we speak, the volume.
we can express a number of ideas as well as our emotions and feelings. Categorize voice modulation, and these are also some of the qualities which are required in the job field also. Next skill which we have to acquire, or which is necessary in the acquisition of a language, is reading. Okay, so listening is the first skill. The next is reading. How do we read? Okay, skimming, scanning, intensive, and then extensive reading helps us to grasp huge chunks of data at one go itself. The reading capability marks the dramatization. The eloquentness increases in effect, making the person more distinguishable in the pack. The more you read, the more it enhances your knowledge, it improves your understanding of the various subject matters, it enhances your vocabulary. Okay, and definitely, due to all these things, you will be considered more distinguishable or sought out person in the pack. Public science, recipes, maps, newspapers, textbooks, travel literature, host of these or the most of these exist in English language. So, reading all this will provide a best oratory skills. So after the reading skill, the next skill which we have to acquire, or which is very, very important, is writing. Once we have heard the language, the various words of the language, once we have understood what those words mean, what they are associated with, and then we are reading it ourselves, the next is we will proceed on the step is writing. Sitting and penning down actively, clearly amble the power of language. So half the battle is won. If we are able to reproduce English properly, grammatically correct, and factually correct, if we are able to reproduce the proper sentences which make sense, which others are able to understand, the communication is responded to, it demonstrates the confidence boost and the command. If we are able to express our thoughts, feelings, ideas in a self-tailored, particular way, it gives us an edge. It gives you an edge in the marketplace, irrespective of the age, the gender, or the region, or the nationality, and so on. How well you are able to express your thoughts, how well you are able to present your expressions, that is very important today. And English, writing of English is very important for drafting emails, writing letters, manuals, instructions, or we can say in short, documentation, even in translation. And today, blogs and vlogs, this is so essential, not even in the social sector, but even in the corporate sector. Many companies advertise, market, do publicize their uh, products as well as their services through their blogs and vlogs. So writing correct English is very, very important. So the blend of this skill will enhance your chance of being a strong contender in the professional field or any job. So the text and the words have the power to reach out every nook and corner of the world and make the employer aware of who to employ to. Now, the next skill and the most important and also the most difficult skill in the acquisition of language is speaking of English. Speaking English or mastering English language is speaking fluently. It implies fluency and control over the subject matter. Okay, you have to speak the language in such a flow that it flows effortlessly, but the content is as important. It is the communication medium of learning orally. Speaking English will give you an access to the world of entertainment, that is exposure to a great
cultural understanding. I know learning English or learning, in fact, any new language is a very demanding and a time consuming effort. But as already has been said, this is the aim of today's activity. Okay. And attending the seminars which have been proposed for the coming days, it will take you towards a bright and shining future. When we say speaking English, it means mastering the phonetics, the sounds of the language, the rhythm, the intonation, perfect modulation while using the words. Which words are to be used at what pitch? What should be the intonation? Okay, how should be the tone of the voice which you have to use so that the meaning is conveyed, because meaning is conveyed through the words, but the words have to be spoken in their correct context. Then only it will be effective in conveying your ideas and information. So, dear participants, I do hope that you are definitely convinced with the importance why English language is needed to be learned for today's job market and also in our life, okay, in the social sphere as well as in all other aspects of life. What is the importance of English language in our life today? So this I would just like to highlight that Angreji Kaksha, this is a 5-day activity. Today it is just an orientation. It is just to orient you, to tell you what or why English language is important. And the next 4 days will actually make you understand what are the different steps in learning the language, like grammar, like oral, vocabulary, making the sentences in the English language, proper sentences, okay, correct, grammatically correct, factually correct, complete sentences. It is a very good initiative which is taken by the Brightways to make you know, learn English, and definitely they will do utmost efforts in this field. This is just a trailer. I am very sure that once you attend these activities for the coming 4 days, you will understand and you will make even more efforts to learn English in a proper manner so that you are able to speak fluent English. Okay, madam. I think, ma'am. Hello. Yes, sir. Yeah, madam. Thanks a lot. Thanks a lot, ma'am, for your valuable information related to why English is important. So, student, basically, problem यही होता है कि we have completed our education in Hindi medium. Okay, we have completed our education in Marathi medium. किसी ने अपना इंग्लिश मीडियम में ही अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ओके, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, राइट, अपना आपके कॉलेज में प्रेजेंटेशन स्टार्ट होते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे जाता है, तो इसके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी होता है. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नीलम मैम MA MPhil PhD, शी हैज गिवन हर वैल्यूएबल थॉट्स ऑन व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट. देन सौम्या कुलकर्णी मैडम कल ग्रामर कंप्लीट करेंगे, चांदनी मैम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, रसिका मैम बैफ MBA MA इन इंग्लिश प्लस कैम्ब्रिज से वो इंग्लिश पढ़ के आए हैं, तो शी इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. Radhika ma'am, MBA from Symbiosis. Right now, she is working in Wellspun Group. So she is going to make you ready for how you have to make your verbal strong. And I'm going to take your lecture on last day that how you are supposed to draft an email and letters. तो मैम ने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश कवर अप किया. अभी आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है, एवरीबडी इज ड्रीमिंग दैट दे वांट टू हैव अ वेरी गुड जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट एवरीवन. लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है किसी भी स्टूडेंट के एंगल से? एक स्टूडेंट को एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहिए,
कि बाबा आपका कॉन्फ्रेंस अच्छा है लेकिन एक नॉर्मल वाला इंग्लिश है, तब कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करता है, बराबर, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आपको किस एंगल से देखता है, ये सब चीजें बताने के लिए फिर आपको एक कॉर्पोरेट सेक्टर का प्लस एकेडमिक बैकग्राउंड वाला एक पर्सन चाहिए था। तो फिर हमारी टीम सोच रही थी कि फिर किसको इनवाइट करें, हम क्या करें। एंड फिर वहां से फिर हमारा मैम विजयलक्ष्मी मैम के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो विजयलक्ष्मी मैम, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो बहुत उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं उनका एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, जिससे आपको एक पता चलेगा कि यू आर वेरी मच लकी दैट शी इज हियर फॉर हाफ एन आवर। मैम बिजी रहते हैं राइट नाउ, मैम वर्किंग एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस सॉल्यूशन ग्रुप विथ कोटक बैंक, ओके, कोटक महिंद्रा बैंक। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैम का अगर बात करेंगे तो शी हैज कंप्लीटेड हर एमकॉम इन अकाउंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। Then she has completed her MBA in major in finance, minor in HR from NMIMS। लेकिन मैं प्लस मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता रहता हूँ कि एमबीए करके आपको रुकना नहीं है। एमबीए के बाद का आपका डेस्टिनेशन होता है एफआरएम एंड सीएफए। तो मैम हैज क्रैक्ड एफआरएम फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिक्स प्रोफेशनल लंदन। देन टीचर बनने के लिए आपको नेट सेट क्रैक करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे गर्ल्स है यहाँ पे कि जिनको टीचिंग प्रोफेशन में जाना बहुत अच्छा लगेगा, तो मैम हैज क्रैक नेट एंड सेट एग्जाम दोनों भी क्रैक किए। एंड मैम ने हैज आल्सो क्रैक डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मैम ने 1.5 इयर्स उनका एक्सपीरियंस था वंडर किड्स में। देन 8.5 इयर्स उन्होंने कोटक बैंक में अपना दिया था फ्रॉम 2006 टू 2015। देन 5.5 ईयर उन्होंने एसएनडीटी कॉलेज घाटकोपर, उनका नाम पीएन दोषी है, ओके, 2016 टू 2021। एंड जस्ट नाउ उनको वापस कॉर्पोरेट में जाने का मन हुआ, तो राइट नाउ शी इज वर्किंग एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैम को मैंने यही एक मैम से एक्सपेक्टेशन है कि कॉर्पोरेट एंगल से हाउ स्टूडेंट शुड मेक रेडी एंड कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन क्या रखता है। तो मैम ने पूरा एक 25-30 मिनट्स का स्पीच रेडी किया है। तो आई विल रिक्वेस्ट मैम कि आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे अंग्रेजी कक्षा इस वर्कशॉप में कंट्रीब्यूट करें। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक्स अ लॉट निकेतन सर एंड एंटायर ब्राइटवेज टीम मुझे इनवाइट करने के लिए। Even after going to the corporate side, I have been wanting to teach and connect with students. तो ऐसा एक opportunity कि फिर से मैं student से touch में रहूँ, ऐसा एक chance देने के लिए बहुत बहुत thanks and thanks for an elaborate introduction. Also thanks to Professor Neelam Kapoor ma'am for initiating the session and Neelam Mulchandani ma'am for setting the stage as to why English is such an important language in today's time. I'm going to talk a little bit about why English, despite being so important, लोग उसके पास पहुंच नहीं पाते। कॉर्पोरेट में जो एक्सपेक्टेशंस है वो आसमान वाला एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगती है ना, वो बहुत मुश्किल और टेढ़ी लगती है। I'm just going to give you a glimpse. I'm going to share my screen. You can share, ma'am. Yes. Yeah. So if you can also open the chat for a little while, it will help me to get responses from students. स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, को होस्ट में ना आपको विजयलक्ष्मी मैम का नाम दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में जाके सिर्फ विजयलक्ष्मी मैम के विंडो को सिलेक्ट करना है। एंड मैम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप सबको मैम को रिस्पॉन्स करना है। मैम दे विल डायरेक्ट रिस्पॉन्स, नो प्रॉब्लम। वंडरफुल, दैट विल रियली हेल्प। मुझे इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं बात करती जा रही हूँ और आप जवाब नहीं दे रहे हो। चलो, और एक और चीज बता दूं कि मुझे ना मूवीज बहुत पसंद है। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पहले सुने होंगे, कहीं पे सम इंटरेक्शन हुआ होगा मेरा, उनको पक्का पता है कि मुझे मूवीज बहुत पसंद है। तो मैं शुरुआत ही करूंगी मूवी और टीवी से। ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन यू विल सी वन फेस। ओके, आपको बताना है ये कौन है और फटाफट चैट बॉक्स में मुझे रेस्पॉन्स दीजिए, कौन है ये। फास्ट 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 फास्ट। अय्यर, वाह, वेरी गुड, सब लोग जानते हैं, वेरी गुड। नाउ यू विल रिमेम्बर प्रॉपरली। नाउ कैन यू टेल मी, ये कैरेक्टर जो तारक मेहता सीरियल में आते हैं, ये अय्यर जो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है? आई एम श्योर सबने देखा होगा, ऐसा कोई होगा ही नहीं इंडिया में जो तारक मेहता ना देखता हो। लेकिन अय्यर के बारे में आपको क्या लगता है? He is a scientist, fine. He tries to speak in English बहुत मुश्किल से, right? But is he good in English? आपको क्या लगता है? He tries to speak. Is he good in Hindi? Tell me that. हिंदी में भी कोशिश करते हैं ना, पूरे सीरियल तो हिंदी में। Is he good in Hindi? Okay. आप यहाँ जो ऑडियंस में हो, आप में से
बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जो घर में हिंदी बोलते हैं, लेकिन अय्यर को देख के आपको तो लगता है ना कि अय्यर हिंदी नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? ही टॉक्स विद अ साउथ इंडियन एक्सेंट, राइट? ही ट्राइज, but he is not so good, but he keeps on trying. He can't speak English clearly, nor can he speak Hindi clearly. और हम क्या करते हैं, जब टीवी पे तारक मेहता चलता है तो हम बहुत मजे लेते हैं। अय्यर को देख के हमें हंसी आती है कि ओ माय गॉड, ये क्या बोले जा रहे हैं, राइट? नाउ लेट मी टेल यू दैट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये जो यहाँ पे दिखता है ना, वो होता नहीं है। ओके, what actually happens here? Okay, somebody is annotating on the screen. I'm going to have to stop that. हाँ मैडम, डिसेबल एनोटेशन कर दीजिए। हाँ Yes, 1 second. Getting the option. 1 second, students. प्रतीक प्रतीक I'm not able to do it. It's आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाने का है। नहीं, वो हो ही नहीं रहा। 1 सेकंड। नहीं, मोर है ना, मोर, आपका मोर ऑप्शन है ना, मोर ऑप्शन वो अपने आप बंद हो रहा है, इसीलिए 1 second, I have to just stop sharing screen and then do it. ओके स्टूडेंट्स, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट, ये प्रतीक जो भी है प्लीज इसको एनोटेशन को मिटा दीजिए, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी डिस्टरबेंस। प्लीज ये कर दीजिए। ओके मैम, एक काम कर सकते हैं 1 second, I'll stop sharing and then do it. अभी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप एक काम कीजिए मैडम, आप है ना ये मुझे ईमेल कर सकते हो अभी। Yeah, I can do it. हाँ, जस्ट मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको ईमेल अभी भेजता हूँ अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना करते रहेंगे, 2-3 ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्टर होते हैं कि जिनको मजा आता है बहुत। हाँ, निकेतन डॉट टावरे, हाँ निकेतन डॉट टावरे @gmail.com, TAWA। स्टूडेंट 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। निकेतन डॉट टावरे @gmail.com। प्रतीक, आपके देखो, आपके ये डिस्टर्बेंस की वजह से कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रतीक, जस्ट निकेतन सर, ब्लैक लिस्ट दिस स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ मैडम अभी। हाँ, रिमूव कर दिया। हाँ मैडम, निकेतन डॉट टावरे @gmail.com। भेज रही हूँ, just sending it. राहुल, अगर आप हो तो तब तक आपका इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे शेयर कर दीजिए, सो दैट स्टूडेंट कैन ज्वाइन दैट पेज। स्टूडेंट 2 मिनट, जस्ट मैम कर रहे हैं, मैं जैसे ही मैम का आ गया मैं शेयर कर दूंगा, फिर डिसेबल एनोटेशन कोई नहीं करेगा मेरे यहाँ से। जस्ट 2 मिनट। हुआ मैडम? विजयलक्ष्मी मैम, आप म्यूट पे No, चले it's गए। still showing in my outbox. Yeah, no, it is still showing in my outbox. Just give me 1 minute. Okay, no problem, madam. Student, it's my request to everyone that don't do this annotation because online चल रहा है, मैम ने इतना valuable time दिया है,
ओके, तो मैडम एक लास्ट ट्राई करते हैं, लेट्स सी। या आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप से ले लेता हूँ। ओके, let me see whichever works first. हाँ, नो प्रॉब्लम, आराम से, स्टूडेंट विल वेट, नो टेंशन। मेरा ईमेल चला गया। ओके, वन सेकेंड। क्या ईमेल आईडी क्या है मैडम आपका? vijayalakshmi.mohan@gmail.com. एक एक पूछिए। यस, आ गए मैडम, 2 मिनट। Yeah, yeah. जस्ट 1 सेकेंड, इट्स ओपनिंग। या यस मैडम, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आई एम Yeah. तो And मैडम take it हम to slideshow mode. या ओके, Yeah. हाँ, थैंक यू। One more click. Yes, pause. Okay. Thank you, students, for waiting. Okay, now you know the photo on the right. कौन से कैरेक्टर के हैं, कौन से मूवी के हैं, किसको याद है? श्रीदेवी. Which movie was it? Now, do you remember Sridevi? What problem she had in that movie? Sridevi कोई corporate बनने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, लेकिन what was the problem? उनको क्या तकलीफ थी कि उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। द होल मूवी टॉक्स अबाउट हाउ शी ओवरकम्स दैट इशू, है ना? तो हमें ये सीख मिलती है कि whatever these people are trying to do, they're trying again and again and again and again, which is the whole point of अंग्रेजी कक्षा। लोग हंसी उड़ाते हैं, लोग जजमेंटल होते हैं, आजू बाजू वाले बोलते हैं कि इनको पता नहीं को, लेकिन कोशिश करते रहते हैं, राइट? लेट मी टेल यू दैट कॉर्पोरेट लाइफ में कोई मजाक नहीं उड़ाता। कोई सामने आके आपके, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो कोई आपके साथ, आपके सामने हंसने नहीं वाला है, लेकिन आपके बारे में जरूर जज करेंगे। दैट इज ह्यूमन नेचर। ना चाहते हुए भी लोग साइड में खड़े होके बोलेंगे, अरे इसको तो 2 लाइन ढंग से बात करना भी नहीं आता, ये कौन सा मार्केटिंग करने वाले हैं, ये कौन सा प्रेजेंटेशन करने वाला है, ये कौन सा प्रोजेक्ट संभालेंगे, राइट? उसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ना जानने की वजह से वो पर्सन की काबिलियत कम हो जाती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर ये बंदा इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत नहीं कर पाता तो बाकी चीजों में मेहनत डालेगा क्या? The same thing happens whether it is in interview, whether it is on the job, or whether it is in a project, whether आप presentation कर रहे हो क्लास में, या corporate में कोई job कर रहे हो, या बाहर कोई माहौल में social environment में किसी से मिल रहे हो, point same है। हर situation में same thing happens. Can I have the next slide, please?
why do people need to use English? नीलम मैम ने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था, तो I will keep this short. 67 countries have adopted English as an official language. In India also English is an official language. Okay. 27 international organizations, जैसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, नेटो है, सार्क है, आसियान है, all these organizations use only and only English. ये ब्रिटिशर्स की देन है, हम पे राज करते थे इसलिए हमने इंग्लिश सीखा, या जो भी रीजन आप बता दो, लेकिन इंग्लिश तो है ही और हमें यूज करना ही है. ओके. अगेन इन कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाओ तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, सारे पेपर्स जो होते हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही होता है. हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश सीखना है. और एमएनसीज में जाओगे, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं, उसमें तो इंग्लिश के सिवा कुछ चलता ही नहीं. कहाँ पे हिंदी यूज होता है या मराठी गुजराती यूज होता है, वो होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में. वहां पे दोनों लैंग्वेजेस चलते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश एंड कोई लोकल लैंग्वेज हो. राइट. सोशल मीडिया, ये भी नीला मैम ने बता दिया था कि आप व्हाट्सएप ले लो या ट्विटर ले लो या लिंक्डइन ले लो, सब जगह इंग्लिश छाया हुआ है. ओके. यू डोंट वांट टू फील आउट ऑफ इट. अगर इंग्लिश में श्रीदेवी के फैमिली मेंबर साथ में बात कर रहे हैं तो उसे भी उस बातचीत में घुल मिलना है. वो घुल मिलने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है. इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट. तुम्हें साइड में खड़े रह के बस देखना नहीं है, तुम्हें बाकी लोगों के साथ में बात करनी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ व्हाई इज इंग्लिश सो डिफिकल्ट? पहली चीज तो ये है कि हम घर पे इंग्लिश बात ही नहीं करते. हमें तो इंग्लिश की आदत ही नहीं है. आपका मदर टंग आपको बहुत आसानी से आ जाता है, आप बचपन से बात करते हो, आप शुरुआत बात करते हो तो भी मम्मी डैडी आई बाबा, आदत हो जाती है. लेकिन इंग्लिश तो हम घर पे नहीं बात करते हैं, हम घर बचपन से नहीं बात करते, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. इट इज सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल, इट इज थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स. कॉलेज में आके 12th स्टैंडर्ड के बाद जब इंग्लिश मीडियम कॉलेज में आते हैं तो बड़ा झटका लगता है कि ओ माय गॉड, हम कोप अप कैसे करेंगे. हमें लैंग्वेज में आंसर्स लिखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में तकलीफ बहुत होती है लोगों को. ओके. देन देयर आर वर्नाक्युलर बैकग्राउंड्स एंड एक्सेंट्स. जब आप अय्यर की बात सुनते हो तो आपको समझ में आता है ना कि अय्यर साउथ इंडियन है. वो एक्सेंट आता है, वो बोलने का तरीका जो है, वो स्टाइल जो है, वो एक्सेंट अपने आप में आ जाता है. राइट. तो हम जैसे मराठी में हम ज बोलते हैं, वही लेटर हिंदी में जाके ज बन जाता है. राइट. इंग्लिश इज हैज द सेम प्रॉब्लम. एक्सेंट्स आर डिफरेंट एंड इंग्लिश का ग्रामर जो है वो बहुत टेढ़ा है. I don't know how many of you all watch old movies. नमक हराम मूवी याद है? अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेमस डायलॉग है, उसमें बोलते हैं I can walk English, I can talk English, I can laugh English because English is a very funny language. बहुत फेमस डायलॉग है ये. क्यों मालूम है? क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर इतना टेढ़ा है कि अच्छे अच्छों को मात दे देता है. राइट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स व्हाई द ग्रामर इज अ प्रॉब्लम. ओके. प्लूरल्स, बॉक्स हो जाता है बॉक्सेस, लेकिन ऑक्स हो जाता है ऑक्सन. टूथ हो जाता है टीथ और बूथ हो जाता है बूथ्स. किसी को धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर वाले मूवीज पसंद है तो छुपके छुपके मूवी में धर्मेंद्र यही बोलते हैं कि पीयूटी पिट होता है लेकिन बीयूटी बट होता है. वो इंग्लिश है भाई, हम क्या करें, हमने थोड़ी ना भाषा बनाई है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पंक्चुएशन. फर्स्ट लाइन देखिए, लेट्स ईट ग्रैंडमा. हमको क्या नानी दादी को खाना है? लेट्स ईट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा को खाने वाला है. बस एक कॉमा का फर्क है. लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, नानी दादी खाना खाएं, फर्क पड़ जाता है. लास्ट लाइन देखना, अ फादर बीट हिज सन बिकॉज ही वाज ड्रंक. अबे कौन ड्रंक था? पापा ड्रंक थे कि बेटा ड्रंक था? पता नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है. राइट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कंफ्यूजन. एग प्लांट का मतलब होता है ब्रिंजॉल. ओके. ब्रिंजॉल में तो एग नहीं होता. फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो फ्रेंच नहीं है, फ्रांस कंट्री से नहीं है, वो अमेरिका से है. गिनी पिग करके एक पेट रखा जाता है, वो चूहा है. वाइज मैन का मतलब है समझदार आदमी, लेकिन वाइज गाय का मतलब है माफिया, डॉन. ओके. लेफ्ट जो वर्ड है उसका मतलब है कि पीछे जो रह गया, उसका ये भी मतलब हो गया कि वो जगह से छोड़ के चला गया. हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इंग्लिश है, पता नहीं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, हम लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं. आजकल सबके हाथ में मोबाइल रहता है, हम बराबर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मराठी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. वाह भाई, गूगल का टूल तो कमाल का है. निकालो. अभी नेक्स्ट स्लाइड देखना, उसमें क्या गड़बड़ होती है. नेक्स्ट स्लाइड, वन स्लाइड प्लीज. या नाउ लुक एट दिस.
इंग्लिश में कहते हैं द सूनर द बेटर, लेकिन हिंदी में उसको ट्रांसलेट करो तो आता है जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी करना है या शैतानी करनी है? थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। अगर हम किसी को याद कर रहे हैं और सामने आ जाता है तो इंग्लिश में बोलते हैं कि शैतान हाजिर हो गया, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारी अभी याद आ रही थी। हम उनको दुआएं देते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं शैतान। इंग्लिश में एक और कहावत है, डोंट वेट, फाइट फॉर योर राइट्स, तुम्हारी हक की चीज के लिए लड़ो। लेकिन हिंदी में बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, शांति से बैठे रहो, आराम से जो मिलेगा मिलेगा। और इंग्लिश में बोलते हैं एज वाइज एज एन आउल, आउल उल्लू जैसा समझदार। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम? उल्लू का पट्टा, है ना? पूरा मीनिंग उल्टा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इंग्लिश इज डिफिकल्ट। कैन वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड प्लीज? ओके, अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, कॉमन सी चीज है, स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं। ब्रिटिशर्स ने आके हमें इंग्लिश तो सिखा दिया, लेकिन अमेरिका में वही ब्रिटिशर्स पहुंच गए और उन्होंने इंग्लिश को बदल डाला। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को बोलते हैं भैया बिल देना, और फिर हम कार्ड कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है? तो फॉरेन कंट्रीज या 5 स्टार होटल्स इंडिया में भी हम चेक से पेमेंट करते हैं, जो बैंक के चेक होते हैं वो भी दे सकते हैं। तो हम बिल मांगते हैं और चेक पेमेंट करते हैं। अभी तुम अमेरिका में जाओगे तो बिल को चेक बोलते हैं और चेक को बिल बोलते हैं। हो गया ना उल्टा? इंग्लिश इज डिफिकल्ट। एंड देन देयर इज वर्बल वर्सेस रिटन। ये नीलम मैम ने भी बताया था कि आप जो जबानी बात करते हो और जो एक्चुअल ईमेल या लेटर लिखते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश इज रियली डिफिकल्ट। कैन वी मूव 2 स्लाइड्स डाउन? या नाउ व्हाट हैपेंस इन मॉडर्न यूसेज। आज के तारीख में अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हमने जो ऑलरेडी सीखा है ना उसको निकालना है। हम आजकल व्हाट्सएप यूज करते हैं और हम इंटरनेट लैंग्वेज यूज करते हैं, सब चीज के लिए शॉर्ट फॉर्म। मुझे तो नहीं समझ में आता है, बोलते हैं क्या TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मुझे नहीं पता है बाबा, मैं बुद्धि हूँ, ओल्ड जनरेशन की हूँ, मुझे ये सब नहीं समझ में आता है। फिर बोलते हैं LMK, लेट मी नो, ASAP, एज सून एज पॉसिबल, LOL, लाफ आउट लाउड। मुझे तो पता था LOL का मतलब है लॉट्स ऑफ लव, अभी LOL हो गया लाफिंग आउट लाउड। हम बोल क्या रहे हैं? इंटरनेट लैंग्वेज बन गया इंटरनेट लिंगो। हम कभी भी शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। हाउ आर यू बन गया HRU। बोलना बात करना हम छोड़ गए हैं। इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। एंड योर जनरेशन, अभी के जो स्टूडेंट्स का जनरेशन है, उनके लिए जो आसान होता है वो होता है इंटरनेट लैंग्वेज। और जब बात करना नहीं आता है तो भर भर के इमोजीज, GIF और फिल्टर बना के थोप दो, आसान हो गया ना लाइफ, है ना? How many of you all can type long sentences? I'm sure all of you now, you don't type at all. जितना मन चाहिए भर भर के ढूंढ ढूंढ के GIF और इमोजी में मैसेजेस भर देते हैं, वेरी फेसबुक में डालो या इंस्टा में डालो, सब लोग यही करते हैं, राइट? आदत छूट गई है लिखने की। बट अंडरस्टैंड दैट आप जब कॉर्पोरेट में पहुंचोगे, जब आप इंटरनेट लिंगो यूज करते हो, वही इमोजीज और फिल्टर यूज करते हो, तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। कॉर्पोरेट में नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। आप अपने बॉस के साथ इमोजी में चैट करोगे ना, बॉस बोलेंगे ये क्या है, तुम कहाँ से आए हो। तुम थोड़ी ना डॉक्यूमेंट लिखोगे और ईमेल लिखोगे कस्टमर को और उसमें तुम इमोजी डालोगे, तो कस्टमर बोलेगा ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है कि तुम टाइम पास कर रहे हो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। यू कांट यूज द सेम काइंड ऑफ टोन एंड लैंग्वेज एवरीवेयर। प्लस आगे हमारा ये जो है, यही चीज जो है और टेढ़ा हो गया, बिकॉज हम पूरा ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमें जो भी चाहिए ना फास्ट पेस चाहिए। आज की तारीख में मुझे जो मिले सब कुछ एक जगह पे, मोबाइल खोला, गूगल टूल दिखा, ट्रांसलेट किया, मैसेज चैट किया, धाड़ 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 फेंक दिया। बट व्हाट हैपेंस इज वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। व्हेन वी रीच कॉर्पोरेट, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको सेटल होने में बहुत तकलीफ हो जाती है, बिकॉज यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश द राइट वे। आप जो नॉर्मल यूसेज में इंग्लिश करते हो, कभी कभी हिंदी वर्ड्स को हम इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिख के भेज देते हैं, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू मोर कंफ्यूजन एंड इट इज इनफॉर्मल एंड कैजुअल। तो सामने वाला जो कॉर्पोरेट आपको देखता है तो वो समझता है कि ये जो स्टूडेंट है ना, फ्रेशर है और कैजुअल एटीट्यूड वाला है, उसको फॉर्मल समझ में नहीं आता। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। ऐसे नहीं है कि आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हो कि चलो आज मैं स्टूडेंट हूँ, कल मुझे जॉब मिल गया, मैं ऑफिस में जाके बैठ के फॉर्मल लैंग्वेज शुरू कर दूंगी। इट डजंट वर्क, इट जस्ट डजंट वर्क। उसको सेटल होने में टाइम लगता है। एक आदत की बात है। आपने क्या डे 1 पे इंटरनेट लैंग्वेज सीखना? नहीं, धीरे धीरे किसी ने आपको बताया ना कि ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे तरीके होते हैं, ये देखो नया इमोजी आया है, नया फिल्टर आया है।
उसी तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन और फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो धीरे धीरे सीखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ कॉर्पोरेट के थोड़े रूल्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल, बट इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अलग चीज होती है। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करो और अपना पॉइंट बता नहीं पाओ, आप जो समझाने जा रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं या कुछ डिस्कशन में अपना मुद्दा सामने रख रहे हैं, और अगर आप रख नहीं पाओ तो वो इंग्लिश लैंग्वेज कोई काम का नहीं है। यू हैव टू कम्युनिकेट। आप अपनी भाषा में जब सोचते हो, अपने मदर टंग में जब सोचते हो, तो वही चीज आप शॉर्ट में बता पाते हो। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जब बताना शुरू करते हैं तो आपको सही वर्ड्स याद नहीं रहते। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लंबे चौड़े तरीके से ना वही चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फ्रेशर्स जो आते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, और सामने वाला जो कॉर्पोरेट सीनियर्स बैठे रहते हैं, वो चिढ़ जाते हैं। देन प्रोनाउंसिएशंस एंड एक्सेंट्स आर डिफरेंट। हम जब बात करते हैं ना, जो सिखाता है उसकी तरह हम बोलने की कोशिश करते हैं। जब आजू बाजू में लोग बात कर रहे हैं उसकी तरह हम बोलने की कोशिश करते हैं। सो जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जिस तरह से स्टाइल से बोल रहे हैं ना, वो एनवायरनमेंट की वजह से, वो सिचुएशन की वजह से हमारा जो है वो बिल्ड होते रहता है। हम जिस तरह से बात करते हैं ना, वो धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चलता, वो चेंज होते रहता है। सही तरीके से बोलना सीखना बहुत जरूरी है, एंड दैट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। एक दिन में नहीं सीखोगे आप। देन देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी। यही प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट आप इंटरनेशनल सिनेरियो में जाओगे या कोई एमएनसी में काम कर रहे हो तो वहां करना भी जरूरी है। अगर आपने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया या सामने वाले ने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया तो चिढ़ना नहीं, करेक्ट। और अगर उस टाइम पे हमने इंग्लिश रॉन्ग यूज किया और दूसरे सामने वाले को हर्ट कर दिया तो इट इज नॉट गुड। रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं कॉर्पोरेट में। ओके, इंडस्ट्री एंड सिचुएशन आल्सो मैटर। अगर आप बीएफएसआई कंपनी में काम कर रहे हो या बहुत बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हो तो वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन वेरी वेरी क्रिटिकल। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग में काम कर रहे हो या एनिमेशन वर्ल्ड में काम कर रहे हो या सम इंडस्ट्री जहाँ पे आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग में काम कर रहे हो, जहाँ पे आर्ट्स और क्रिएटिविटी की बहुत जरूरी है, वहां पे इनफॉर्मल लैंग्वेज चलता है। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर वर्किंग। आपका करियर कहाँ ले जाने वाला है वो सोचो। उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे ना कल ना मुझे एडवर्टाइजिंग में काम करना है, चलो इंग्लिश छोड़ दो, वो नहीं होता। लेकिन वहां के तौर तरीके, वहां के लैंग्वेज के रूल्स आपको सीखने हैं। ओके, एंड वोकैबुलरी डज नॉट मीन बुक वर्ड्स। आपको नए वर्ड सीखने हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है, न्यू वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको 3 इडियट्स का चतुर नहीं बनना है। मशीन का मीनिंग अच्छी तरह से 3 इडियट्स में से सीखना है, नॉट लाइक चतुर, ओके, बट लाइक रणछो। ओके, नोबडी लाइक्स लंबा चौड़ा भाषण। सिंपल में समझाने की कोशिश करो। कीप इट सिंपल, दैट इज द की टू कॉर्पोरेट लैंग्वेज एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. I'm going to cut it short. I'm just going to say that we have to recognize that English is an international language. It is the main language of this planet. हम उसको उल्टा तो नहीं कर सकते। जो 50 साल से हम पूरी दुनिया इंग्लिश पे जी रही है, हम उसको तो उल्टा नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन exercising choice comes through empowerment. I'll give you one simple example of why this happens. अगर आप यूरोप में जर्मनी करके कंट्री है, इफ यू गो टू जर्मनी ना, वहां पे सब लोग इंग्लिश जानते हैं। जर्मनी इज पार्ट ऑफ यूरोपियन नेशंस, काफी आगे डेवलप्ड कंट्री है, एंड एवरीवन देयर नोज इंग्लिश। लेकिन आप जर्मनी में जाओगे तो वहां पे जानते हुए भी कोई इंग्लिश में बात नहीं करता। व्हाई? इट्स अ चॉइस। आई नो द लैंग्वेज बट मुझे कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। राइट? दैट इज एम्पावरमेंट। I know the language, I understand the language. सामने वाला जो बोल रहा है मेरे समझ में आ रहा है, मुझे अगर बात करना पड़े तो I can talk, I can reciprocate. See in English, what Sridevi does at the end when she gets into the aeroplane is, do you have any Hindi newspaper? Right? That is empowerment, that is choice. I know the language, I am confident, I can speak the language, I can manage any situation in English, but I choose, I want to communicate in which language. That is the essence of corporate. सामने वाला बोले मुझे समझना चाहिए, आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। मुझे कॉर्पोरेट में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाना, कंधा मिलाना है। लेकिन अगर वहां पे माहौल है कि मुझे हिंदी में, मेरी हिंदी के साथ काम चल जाए,
स्पीक इन हिंदी, नो प्रॉब्लम। बट दूसरे सामने वाले तुम्हें देखकर ये ना बोले कि अरे इसको इंग्लिश भी नहीं मालूम है, इतना भी नहीं मेहनत कर सकता इंग्लिश सीखने का। व्हाई इज बिकम्स अ प्रॉब्लम अगेन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सुपर 30 मूवी? सबने देखी है ना? वहां पे ऋतिक क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को? आपको परफॉर्मेंस करना है स्टेज पे जाके, एक वर्ड हिंदी का नहीं बोलना है। वहां पे लोगों पे क्या बीतती है, लोग क्या बोल, जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से स्टेज पे जाते हैं, they go on the stage, they try, and then they get over it. What is it showing? It is showing that the attitude is within you. What corporates want is that attitude. क्या आप में सीखने की क्षमता है? क्या आप मेहनत करोगे और वो भाषा सीखोगे? एंड इन दैट सिचुएशन आपको अगर भाषा नहीं यूज करके आपका काम चल रहा है तो डू इट, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Effectively, the whole aim is to become confident and competent in your career. आपको competition झेलना है, वो situation में blend होना है, और उसके लिए it's a journey of learning. आप English एक दिन में नहीं सीख सकोगे। निकेतन सर और ब्राइटवेज जो कर रहे हैं आपके लिए, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। आपको बताएंगे कि इंग्लिश के बेसिक रूल्स क्या हैं, ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे उस इंग्लिश के रूल्स को अगले 4 दिन में आप जो सेशंस अटेंड करोगे, यू हैव टू टेक ऑल दोस लेसंस एंड यूज देम द वे नीलम मैम सेड। आपको रीडिंग करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको इंग्लिश के मूवीज और टीवी शोज देखने चाहिए, न्यूज देखनी चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज पढ़नी चाहिए रोज। फिर आप जाके इंग्लिश सीख पाओगे। और कल के आप कॉर्पोरेट में जब कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल या रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम your confidence will take over. Even if you make mistakes in English, you will be standing out of the crowd. आप अलग से दिखोगे और सबके नजर में आओगे. That's all is the aim of entire Brightways team and this 5 days journey of अंग्रेजी कक्षा. आपको बन के रुक जाना है कि या आपको शशि की तरह इंग्लिश सीख के कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीच देना है डिस्पाइट मेकिंग मिस्टेक्स? द चॉइस इज योर्स. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. थैंक यू मैम. इट वाज अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन. स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छा लगा होगा तो मैडम को पर्सनली जाके थैंक्स बोलिए. वहाँ पे मैडम का ऑप्शन है वहाँ पे. Yeah, so messages have started coming. everybody Thank you so please much. send your thanks to Neelam ma'am and as well as Vijay Lakshmi ma'am. दोनों का चैट बॉक्स आपके पास ओपन है बिकॉज संडे के शाम को उन्होंने बहुत टाइम निकाला है. मुझे मत थैंक्स बोलिए, मैम को जाके थैंक्स बोलिए. एवरीबडी, अक्षता, जूली, एवरीबडी मैम के चैट बॉक्स में जाके उनको थैंक्स बोलिए सो दैट योर ग्रेटिट्यूड विल रीच टू देम. बिकॉज आपका एक थैंक्स स्पीकर्स का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनका दिन एक अच्छा कर देता है. ओके, तो आई थिंक मैम, नीलम मैम थैंक्स अ लॉट, विजय लक्ष्मी मैम थैंक्स अ लॉट. आपने बहुत एक अच्छी तरीके से इस एक्टिविटी का स्टार्ट कर दिया है एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे आपके पास. तो वेन एवर यू हैव टाइम प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर ये जो कॉज हमने रखा है. ओके, तो स्टूडेंट थैंक्स अ लॉट. मैम विजय लक्ष्मी मैम थैंक्स अ लॉट. नीलम मैम, आप आर यू ऑडिबल? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है नीलम मैडम. Yes, sir, I am in the meet and आई होप, हाँ, तो आई होप यू आर आल्सो गेटिंग थैंक्स फ्रॉम द स्टूडेंट. And Vijay Lakshmi ma'am, it was very good presentation and very Thank good. you so much. Lecture. Yes, madam. Thank you. Neelam Kapoor madam, I think she has left. हाँ, तो we are so thank you for giving me an opportunity. Please continue. Yes. Okay, so student Niketan sir, thank you so much for inviting me. Thanks a lot to Brightways team for organizing this. And students, I request you कि Brightways के इतने सारे programs है, please take benefit of it. Okay, they do a lot of interesting programs. This is just one. Don't miss any session that Brightways organizes. Make use of it. Yes, thank you मैम, विजय लक्ष्मी मैम. तो स्टूडेंट, ये आज का ट्रेलर था आपका, तो इसका मैंने लाइव टेलीकास्ट भी कर दिया यूट्यूब के ऊपर. तो मेरा अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ. इवन टुडे आल्सो आई एम फेसिंग या व्हाट वी कैन से कि हमको एक एज होता है कि स्टूडेंट हमारे जो होते हैं महाराष्ट्र के, ओके, यूपी के होते हैं, गुजरात के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है. दे रियली हैविंग अ बिग पोटेंशियल टू एक्सटेंड द कॉर्पोरेट सेक्टर. But until unless if you don't have that kind of command on English, it will be very difficult for you to survive in the corporate sector. Because जो दिखता है वो बिकता है, और दिखने और आपको वहाँ पे अगर खुद को मार्केटिंग करना है खुद का, तो आपको इंग्लिश के सिवाय वहाँ पे ऑप्शन नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम विजिटिया कॉलेज,
बहुत 90% लेके आए थे, 95% लेके आए थे, बट इंग्लिश में हैव के जगह पे हैज यूज कर दिया, हैड के जगह पे वॉज यूज कर दिया, तो आगे वाला बंदा अगर एकदम जबरदस्त इंग्लिश तरीके से यूज करता है तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आने वाले टाइम में कल सौम्या मैम इज हियर, सौम्या मैम कल आपका ग्रामर कवर अप करेंगे, बराबर। उसके बाद आपकी छोटी छोटी चीजों को हम कवर अप करेंगे। लेट्स सी कि आप में से कितने लोग अच्छी तरीके से इंग्लिश अंग्रेजी कक्षा से कॉन्फ्रेंस लेके जाएंगे। ओके, तो मैम थैंक्स अ लॉट, thanks a lot Neelam ma'am, thanks a lot Vijay Lakshmi ma'am for enlightening this particular session, and we wish everyone all the best for coming future. Thanks a lot ma'am. Thank you, sir. Yeah, so Thank you. officially we are winding this